नमस्ते। चलिए आप देखते हैं इलिप्स। इलिप्स के विषय में कोनिक सेक्शन, प्लेन और डबल नाइफ्ड कोन के इंटरसेक्शन से ही इलिप्स का फॉर्मेशन होता है। द कर्व्स आर obtained with the section of cone and plane, but we can define in another way, such as you define the circles and the parabola. So now let us see first what is the ellipse. So what is the ellipse? Ellipse is the set of all points in a plane, the sum of whose distances from two fixed points in the plane is constant. And ellipse is the set of is the set of and ellipse is the set of all points in a plane the sum of whose distances from two fixed points from two fixed points in the plane is constant. So that is the ellipse. The ellipse is the set of all those points. Ellipse is the set of all points in the plane, the sum of whose distances from two fixed points in the plane is constant. The sum of whose distances from two fixed points in the plane is constant. Now we consider in this way. We consider just as consider two fixed points F1 and F2, the distances. Let the point P1, P2 and P3. So this point P1 F1 plus P1 F2, P2 F1 plus P2 F2 and P3 F1, these are constant. That is what? P1 F1 plus P1 F2, that will be equal to P2 F1 plus P2 F2. This will be equal to P3 F1 plus P3 F2.
The sum of the distances from two fixed points, sum of the distances from P1, P2, P3 from these two fixed points F1 and F2 are constant. That this will be the ellipse. And now here you note the constant which is the sum of the distances of a point on the ellipse from the two fixed points is always greater than the distances between the two fixed points. This fixed point is always greater than the distances between two fixed points. It means that, now you note here, note the sum of distances of these two fixed points means that is P1 F1 plus P1 F2. These are always greater than the sum of distances between the two fixed points. So now you note this is always greater than these two fixed points. So now let us see some of the parameters of the ellipse. Now let us see some of the parameters about the ellipse. Here you see, now consider the ellipse. This is F1. This is the F2, F1, F2, and this is the center of the ellipse, and this will be x-axis, and here you see, now we consider this is A dash and B dash, and this is C. So now in these two A dash, this will be the known as the vertex of the ellipse. This is also known as the vertex of the ellipse. This is the vertex, and this A dash, this will be the this is the major axis. This will be the major axis of the ellipse. This A dash, this is the major axis. This will be the major axis. This will be the major axis of the ellipse. This will be the major axis of the ellipse. Major axis of the ellipse. So this is the major axis of the ellipse, and this PC. Here you see this BB dash. A dash is the major axis. Here you can see here we can write this BB dash. A dash, this is the major axis, and BB dash is the minor axis of the ellipse. ठीक, minor axis of the
ellipse. So this is the major axis and minor axis of the ellipse. In this case here you see, now we always express the, here you see, this is F1, F2 is the foci of the ellipse, and the standard equation of the ellipse. This is the E dash and B dash major axis, and major axis this E dash. Major axis E dash, length of this major axis, the length of foci from the center of the ellipse, the length of the foci is C. So now we consider the length of foci from the center is C. So this distance CE, we consider this distance is C. This distance is C. And we consider this distance is A, and we consider this distance is B. So that we can write major axis E dash here, major axis, length of major axis, that is 2A, and length of minor axis, that is 2B, and the length of foci from the center, distance between foci, distance between foci, that will be equal to 2C. So now you remember, this is the basic things of the ellipse. The distance between the foci is 2C. A is the semi-major axis, E the length of semi-major axis, length of semi-major axis. B is the length of semi-minor axis, and C is the distance of the one of the foci from the center of the ellipse. Distance of the one of the foci from the center of ellipse. From the center of the ellipse. So now you know all of this, and now let us see relation between the center of the ellipse. Relation between the center of the ellipse now let us see relation between the A, B and C. A, B and C from the center of the ellipse. Relation between A, B and C. Now let us see relation between A, B and C. Semi-major axis, semi-minor axis, and the distance of the one of the foci from the
center of the circle. So now let us see the relation of this. Now in this figure, now A is the semi-major axis, B is the semi-minor axis, and D is this. So now you see, let us see the relation between this. Here you see, now take the, here you see F1 and F2, and F1 and F2, here take, this is the F1 and F2, here you take F1A. Now you consider if P is the point and Q is any point is this, P is any point on this, and F1 and F2 is the foci. And now join this QF1 and QF2. QF1 and QF2. And you know that what? The any point lie on the ellipse, the sum of whose distances from two foci are constant. It means that point P lie on the major axis, since point P is on major axis. So now F1P plus F2P. F1P plus F2P. तो F1P कितना हो जाएगा? F1P F1 कितना है? C और A OP कितना है? A. तो A कितना हो जाएगा? F1O A हमारा कितना है? C. A है C और A OP कितना है? A. तो A हमारा हो जाएगा F1P C प्लस A. तो हो गया C और F2P मीन्स A. तो OP माइनस OF2 तो कितना हो जाएगा? A माइनस C तो प्लस A माइनस C. तो दिस विल बी इक्वल टू 2A. तो F1P plus F2P that will be equal to QF1 plus QF2 because point P and Q lies on the ellipse. So that will be equal to F1Q. Now this will be distance. Now we measure here. Here we see F1Q plus F2Q. The F1Q plus F2Q. F1Q, we can write this distance F1Q. So this is right angle. So we can write this distance under root B square plus C square as per Pythagoras theorem, and this will be under root B square plus C square, so that we can write here under root B square plus C square plus under root B square plus C square. This will be equal to 2 under root B square plus C square. So that these two will be equal. So these two will be equal. So now this is 1 and this is 2. Now from 1 and 2. Now from 1 and 2 can write 2A equal to under root B square plus C square. This will be 2.
तो दिस implies that what? A square equal to B square plus C square. That will be implied that C equal to under root A square minus B square. So this is the relation between the A, B and C. The C equal to what? Under root A square minus B square. The sum of the special case of the and ellipse in this. So this is the relation between A, B and C. So this will be the relation between A, B and C. So there is the relation between A, B and C. Here is the sum of the special cases. Special cases of the an ellipse. Now here you see C square equal to ABC. In this, here you see from this, now we see some of the special cases of an ellipse. Now here special cases of ellipse. Now we know that C square equal to A square minus B square. In this, keep A fix. अगर हम A को फिक्स रखें, keep A fix and vary C from 0 to A. Now keep A is fixed. A को हम फिक्स रखते हैं. A को हम फिक्स रखते हैं. A. Keep A is the fix and C vary from 0 to A. अगर C vary करता है from 0 to A, तो then what happen? The resulting ellipse will vary in shape. तो ये जो ellipse है, अगर हम A को फिक्स रखते हैं और C को धीरे धीरे 0 से A की तरफ वैरी कराते हैं, तो क्या होगा? ellipse का शेप चेंज होता जाएगा. तो ellipse का शेप चेंज होता जाएगा तो दो कंडीशन होगी. ellipse का शेप चेंज होगा तो उसके लिए दो कंडीशन होगी. पहला कंडीशन होगा, अगर हम मान लीजिए यहाँ when C इक्वल टू 0, अगर C इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा? देन जब C इज इक्वल टू 0 तो क्या हो गया कंडीशन? देन A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर. दिस implies that what? A इक्वल टू B. इट मीन्स दैट what? जब A इक्वल टू B हो गया then so the ellipse becomes circle. तो A ellipse हमारा क्या हो जाएगा? A ellipse हमारा जो है इस तरह से हो जाएगा. A ellipse हमारा सर्किल हो जाएगा. ये हमारा A हो गया A B. तो जब A और B इक्वल हो जाएगा तो इलिप्स हमारा सर्किल हो जाएगा. इलिप्स सर्किल हो जाएगा. इट मीन्स दैट F1 इक्वल टू F2. इट मीन्स दैट व्हाट? F1 इक्वल टू F2. तो F1 F2 लाइज ऑन द सेम पॉइंट. F1 एंड F2 आर कंसाइड, दोनों कंसाइड करेंगे. और दूसरा केस है when C अगर शिफ्ट हो जाता है A के इक्वल, when C इक्वल टू A. दूसरा केस है अगर सेकेंड केस है when C इक्वल टू A. अगर C A के इक्वल हो जाता है तब क्या होगा? यहाँ C अगर A के इक्वल हो जाता है, C अगर A के इक्वल हो जाता है तो क्या होगा हमारा? C इक्वल टू A. तो यहाँ दिस विल बी इक्वल टू B इक्वल टू 0. जब C इक्वल टू A हो जाएगा तो B इक्वल टू 0 होगा. तो हमें फिगर क्या मिलेगा? ये हमारा F1 हो गया,
ये हमारा F2 हो गया, ये F1 F2 हो गया, और ये हमारा हो गया ए हो गया, ये हमारा ए हो गया, ए हो गया। तो हमें क्या मिलेगा? ए लाइन सेगमेंट। तो द इलिप्स reduces to line segment. Ellipse reduces to line segment. If C equal to A, तो B equal to 0. इसमें देखिए, इस फिगर में if C equal to 0, अगर AC 0 हो जाता है, AC जो है फोकस 0 हो जाता है, अगर C A के इक्वल हो जाता है, AC A इक्वल हो जाता है, तो हमारा B क्या हो गया? 0। तो जब बी ए हमारा 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ ए लाइन सेगमेंट बचेगा। तो इलिप्स रिड्यूसेस टू लाइन सेगमेंट। तो इलिप्स यहां हम लिख सकते हैं इलिप्स if b equal to 0, then हम कह सकते हैं कि इलिप्स रिड्यूसेस टू ए लाइन सेगमेंट। तो इलिप्स reduces to line segment. Ellipse reduces to line segment. तो ellipse जो है लाइन सेगमेंट में रिड्यूस हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है। व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी? Eccentricity. The eccentricity is the what? Eccentricity of an ellipse is the ratio of the distance from the center of the ellipse to one of the foci and to one of the vertices of the ellipse. This is what? Eccentricity. The eccentricity of an ellipse is the ratio of the distance from the center of the ellipse to one of the foci and to one of the vertices of the ellipse. So that is the E equal to C by E. This is the eccentricity of the ellipse. The eccentricity is the what? Ratio of the distances of the one of the foci from the center of the ellipse to one of the vertices of the ellipse. So this is the eccentricity of an ellipse. So we can define the eccentricity of the ellipse. Now let us see standard equation of the ellipse. So here we can write the standard equation of the ellipse. This is the eccentricity. So now we can write the eccentricity E equal to C by E. Next is the standard equation of an ellipse. Standard equation of an ellipse, and there are two standard equation of ellipse. Standard equation of the ellipse. First, consider the ellipse in this way, and when this is the our ellipse. Now consider A, B, C, D, O,
F1 and F2, and this is focus, coordinate of focus minus C0 plus C0, and here is the minus C0. This is the focus, and vertices of this is A0. A0 is here is minus A0, and this is the 0 and B, and this will be 0 and minus B. So this is the now standard equation of the ellipse is if the major axis is on the x-axis. This is the x-axis, and this is the y-axis. So if the major axis is lie on the x-axis, then standard equation x square upon a square y square upon b square equal to 1. So now here it is called standard equation because the center of the ellipse is the origin of the coordinate axis, and major axis and minor axis on the coordinate axis. The center of the ellipse lies on the origin of the coordinate axis, and major axis and minor axis on the coordinate axis. So as it is known as the standard equation of the ellipse. In the another cases, what happened in the another cases? Ellipse in this way. The major axis, this is the x-axis, x dash, here is the O, and this will be O, and again we write here AB, and this is y dash, this is the focus is on, here is what? Focus is on this, focus is on y-axis, this is F1 and F2, here is the 0 and C, and 0 minus C and D, vertex is here, and this is focus, and this will be the B0 and minus B0, and this will be the 0A and 0 minus A. In this case, the major axis is on y-axis. In second case, in the first case, what happened? Major axis on x-axis, and in this case, major axis on y-axis. It means that what? Foci on y-axis. So our concept is what? We determine the intercept from the major axis. The parabola is symmetric with the both axes, but we determine the intercept from the major axis. The major axis is the main, in this case what? The major axis on the y-axis, so that the equation of this is what? X square upon b square y square upon a square equal to 1. In this, what? The major axis and the minor axis will be changed. The variable is changed. The a and b will be changed. A is on y-axis and b is on x-axis. So this is the standard equation of ellipse. A standard equation of ellipse इसलिए कहा जाता है क्योंकि center of the ellipse
center of the ellipse lies on the center of the ellipse lies on the origin of the coordinate axis and major axis and minor axis lies on the coordinate axis. ठीक। और यदि सेंटर और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस lies on the perpendicular to the coordinate axis and center lies not on the origin. सेंटर अगर origin पर लाई नहीं करता है, प्लेन में किसी भी पॉइंट पर लाई करता है और इसका मेजर एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस की परपेंडिकुलर होता है, तो ए बिवाइंड द स्कोप ऑफ योर बुक, इसका अध्ययन आपके इस एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है और आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में यही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स है। ठीक, तो इसी को हमें अध्ययन करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो नाउ लेट अस सी हाउ यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ठीक, तो फर्स्ट लेट अस सी हाउ यू फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। Let us see how to derive an standard equation of an ellipse. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि हम कैसे इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड आउट करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, मान लीजिए ये हमारा इलिप्स हो गया ये, और ये हमारा फोकस हो गया F1 और ये हमारा हो गया फोकस F2। कोई हम पॉइंट P कंसीडर करते हैं इलिप्स पर, पॉइंट P हो गया हमारा XY और ये हम डिस्टेंस लेते हैं PF1 और ये PF2 और ये कोऑर्डिनेट हमारा हो गया -C0 और ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा C0, ये पॉइंट हो गया हमारा 0, जैसा कि आप जानते हैं। अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं PF1 और PF2। तो नाउ वी नो दैट व्हाट, हम इसके पहले शो कर चुके हैं PF1 प्लस PF2 दैट विल बी इक्वल टू 2a, इसको हम शो कर चुके हैं। तो PF1 डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर PF1 एंड PF2 हो जाएगा हमारा x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y माइनस 0 तो y स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट, ये हो गया अंडर रूट इक्वल टू 2a, ये हो गया। ठीक, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा हो गया x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट हो गया इक्वल टू, इसको हम उस साइड करते हैं 2a, transfer this on this side minus under root x minus c whole square plus y square. Now squaring this, इसको हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड्स,
इस साइड में हम स्क्वायरिंग करेंगे, इस साइड में हम स्क्वायरिंग करेंगे इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो इस साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करते हैं तो हो गया 4a स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो हो जाएगा प्लस x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा। ठीक, 4a स्क्वायर प्लस वाई। अब इसमें देखिए वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2xc बचेगा, यहाँ 2xc बचेगा, और यहाँ माइनस 2xc बचेगा, ये हो जाएगा 4xc माइनस 4xc, और ये जो है हमारा इधर आ जाएगा, तो इसको हम इधर करते हैं 4a अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा a हो गया। और इधर हमारा बचेगा, इधर हमारा क्या बचेगा 4a स्क्वायर माइनस 4xc, ये हो गया हमारा। अब 4a स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, 4a से डिवाइड करते हैं तो हमारा हो गया x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 4a से डिवाइड करते, नाउ यू गेट a माइनस, यहाँ 4 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा c बाई ए एक्स, ये हो गया a माइनस सी बाई ए एक्स, ये हो गया। अगेन स्क्वायरिंग दिस, इसको हम फिर स्क्वायर करते हैं। ठीक, अगेन स्क्वायरिंग दिस, इसको हम फिर से स्क्वायरिंग करते हैं, तो इसको हम अगर फिर से यहाँ स्क्वायर करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम फिर से स्क्वायर करते हैं तो यहाँ हमारा आ गया x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। और इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, इसको फिर से हम स्क्वायर करते हैं। ठीक, फिर से हम इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस ए कैंसिल हो गया 2cx माइनस 2cx हो गया प्लस सी स्क्वायर पान ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा। ठीक, ये हो गया 2cx। अब इस साइड को स्क्वायर करते हैं, तो इस साइड को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और 2cx कैंसिल हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इधर आ गया, तो यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे
ત્યાં हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर इस साइड में है, एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लिए तो हमारा आ गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देन यू गेट वाई स्क्वायर। फिर हमारा आ गया यहाँ, फिर हमारा आ गया वाई स्क्वायर, फिर हमारा आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो नाउ यू गेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1. अब a square minus c square, that will be what? b square. So now here you see x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. Because b square here, b square equal to a square minus c square. In the place of a square minus c square, write the b square. So now we get the equation of ellipse in standard form. तो ये equation of ellipse standard form हो गया, ठीक। तो this is the standard form of the equation of the ellipse. इसमें एक कंडीशन है, इसमें अगर p x y lie on the ellipse, so now if what happen, p x y lie on the ellipse, so we have what, यहाँ कुछ डिस्कशन है, इसको हम यहाँ करते हैं, इधर हम करते हैं। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गए। If pxy lies on ellipse, we have हमें a इक्वेशन मिल गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1। तो हम इससे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कुछ न कुछ कर सकते हैं। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर is less than equal to 1. It means that what? So what happened? X lies between minus a is less than equal to x is less than equal to a. The x lies between vertex minus a to e. So this is the ellipse. ठीक? So now this is the ellipse. Here is the sum of the discussion. Ellipse, now you know that ellipse is symmetric with both the coordinate axis, both the major and minor axis. And now here you see there are the important things is that, now you remember this, if the denominator of x square is greater than the denominator of y square, then the major axis is on, then the major axis is on x axis, means major axis is on an x axis. And if the denominator of any one of these is more than, just as denominator of y is greater than denominator of x, then major axis is on y axis.
the measure, now you see if the coefficient of x square is greater to the coefficient of y square, then the major axis is on n axis. अगर किसी भी के x स्क्वायर या y स्क्वायर में जिसका भी कोफिशिएंट ग्रेटर होगा मेजर एक्सिस उसी पर होगा. x एक्सिस का ग्रेटर होगा तो x एक्सिस पर होगा, y एक्सिस का ग्रेटर होगा तो y एक्सिस पर होगा. x स्क्वायर का कोफिशिएंट x स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है तो मेजर एक्सिस x एक्सिस पर होगा. अगर y स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर होता है तो मेजर एक्सिस y पर होगा. ठीक, तो एक विशेष रूप से ध्यान देना है. इसमें एक चीज और ध्यान देना है, लेटस रिएक्टिव. तो लेटस रिएक्टिव के विषय में देखते हैं. लेटस रिएक्टिव क्या होता है? So now let us see the lattice reactive. Lattice reactive. Lattice reactive क्या होता है? Lattice reactive of the standard equation of the ellipse. Standard equation of the limit x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. अब चलिए देखते हैं कि how you determine the lattice reactive. चलिए हम देखते हैं कि lattice reactive कैसे डिटरमिन करते हैं. लेटेस्ट रिएक्टिव कैसे डिटरमिन करते हैं? असल में लेटेस्ट रिएक्टिव क्या होता है कि परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द फोकस F2 and F1. So this is the perpendicular line segment passing through the one of the foci which ends points on the ellipse, lies on the ellipse, just as this is AB and CD. The AB, here is the AB and CD is the lattice reactive. This will be the lattice reactive. Lattice reactive. Now let us see how you find the lattice reactive. Now to determine the lattice reactive, consider this AF2. Let this will be AF2. Now here you see, consider this will be L. This will be L, and now this focus, this distance is known as C. So then you can write the coordinate of A, that is the C and L. And you know that E is the eccentricity of the ellipse. Therefore, we know that this C and L, in the place of C, you can write A, E and L. To show that the coordinate of A, here you see A is what? C and L. The C and L, in the place of C, you can write A, E and L. So here is the what? A, E and L. A, E and L. This is the standard equation of the ellipse. A, E and L. So now write the value of x here. A का whole square upon A square, y square upon B square equal to 1. So this will be what? A square is cancelled. Here you get E square. So you get this E square equal to, here you get E square
equal to y. In the place of y, this is L square. The E square equal to what? B square, B square, B square, and 1 minus L square, 1 minus L square. B square and 1 minus L square. 1 minus L square. B square 1 minus L square. This one. But here you know that what? But C square equal to, but C is what? E. Sorry. But we know that E. But we know that E square equal to C square by E square. But you know that E square equal to C square by A square. So that is the what? E square equal to A square minus B square by A square. E square minus B square by A square. The A square minus B square by A square. So that is what? 1 minus B square by E square. So that is the E square. So here you get this one is the 1 minus E square, and this is the L square. So write the value of E square. So here is L square equal to, we get what? B square and 1 minus 1 cancel, so we write here B square minus E square. So that is the B to the power 4 by E square. This is L square. So this implies that L equal to B square by E. So this is the length L. So let us let him AB. Then AB is what? Let us react him. Let us react him. AB is what? AB is 2L. 2L. So that is the 2B square by E. The length of lattice reacting is 2B square by E. So that is the length of lattice reactant, that will be equal to 2B square by E. So now you remember this, length of lattice reacting is 2B square by E. So now you remember the length of lattice reacting. Okay? So this is the ellipse. So this is theory of the ellipse. So there is no doubt about the ellipse. Now we discuss everything in the ellipse. ellipse के प्रत्येक एक पॉइंट को मैं इसमें डिस्कस किया हूँ. Eccentricity, what is the eccentricity? Major axis, minor axis of the ellipse, standard equation of the ellipse, when major axis on the x-axis, when major axis on the y-axis, and how you guess the major axis on x-axis or y-axis. All of this we have discussed in this. If the denominator of the x-axis is greater than major axis on x-axis, if the denominator of y-axis, y is greater than the denominator is on y-axis. So now you remember all of this. Next we see the sum of the problem of the ellipse. Thank you so much.